एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर व्हेनेवर द फर्स्ट ईयर्स आते हैं कॉलेज में, उनको एक एक्सरसाइज दिया जाता है गोल सेटिंग का. एक इंडक्शन प्रोग्राम रहता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम. व्हाई आर यू हियर? 3 साल के बाद आपको वेयर डू यू सी योर सेल्फ, आपको जर्नी जो है 3 साल की, इसमें क्या क्या सीखना है. सो देन द चिल्ड्रन आर वेरी रॉ. तो उनका इतना स्पेसिफिक नहीं रहता गोल सेटिंग, बट एटलीस्ट दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स. चिल्ड्रन आर लकी इनफ दैट probably when they graduate they get an opportunity to go abroad immediately, because the world is becoming seamless now. इतना compartmentalized नहीं है जितना पहले था. 7th and 8th, 9th and 10th they are taught how to make a budget. Then they are taught, they are introduced to share markets, they are introduced to what are investments, how you can invest your money. So at the end of the 10th standard they are able to they're at least equipped. I won't say they're experts, but they are at least equipped कि खुद का सेविंग एक मैनेज कर सकते, एक प्लान रहता है दिमाग में. सो दिस इज द काइंड ऑफ एवोल्यूशन दैट द एजुकेशन इज सीइंग राइट नाउ. नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा डिफरेंट फील्ड के बारे में जानकारी लेकर आते हैं, पर आज हम एक ऐसी चीज़ पर बातचीत करने जा रहे हैं जो कि हर स्टूडेंट को अपने लाइफ में उसका यूज़ होगा. और इसीलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासरूम टू बोर्ड रूम विथ हायर एजुकेशन. इस विषय पर हमारे साथ बात करने जा रही है आदरणीय डॉक्टर प्रणति टिळक मैम. आदरणीय डॉक्टर प्रणति टिळक मैम जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक इनके फैमिली से बिलोंग करती है, जो उनकी 5th जनरेशन है, जो एक विजनरी एजुकेटर है एंड अ ग्रेट लीडर हैं. आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ हासिल किया है. हाईली एजुकेटेड एंड अचीव्ड मोर देन 45 अवार्ड्स, जिनके नाम पर 3 पेटेंट भी दर्ज है, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक प्रोफेसर से की थी और आज वो बोर्ड रूम तक पहुंच गई है, जो स्कूल्स के साथ भी काम करती है और यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस के साथ भी काम करती है. तो आइए आज जानते हैं उनके एक्सपीरियंस से क्लासरूम से बोर्ड रूम तक का सफ़र हर स्टूडेंट की लाइफ में कैसे होना चाहिए, कैसे स्किल्स आपने एक्वायर करने चाहिए. तो लीजिए मिलते हैं डॉक्टर प्रणति तिलक मैम से, जो चेयरमैन है, डीन है, प्रोफेसर है, डायरेक्टर है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की. नमस्कार मैम. नमस्ते. आपका भारत गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासरूम टू बोर्ड रूम विथ हायर एजुकेशन. और आपकी प्रतिभा इतनी अष्टपहलु व्यक्तिमत्व है, इतना वर्सटाइल व्यक्तिमत्व है, तो आज हम सच में प्राउड कर रहे हैं कि आज तिलक परिवार से हमारे साथ बातचीत करने आप यहाँ पर मौजूद है. और आपका एक्सपीरियंस और आपका जो हायर एजुकेशन है, ये अलग ही आइडेंटिटी, एकदम अलग ही आइडेंटिटी आपका स्टैंड आउट करता है. जब मैंने आपका सब पूरा पढ़ा आपके बारे में, तो इट वाज रियली ऑसम. मतलब एक प्राउड फील होता है कि अपने पुणे में ऐसा व्यक्तिमत्व है. थैंक यू सो मच. तो आपका हमेशा मैंने ऐसे देखा है या सुना है लोगों से कि आप हमेशा बच्चों के लिए कार्यरत रहती है, स्कूल से लेके टिल कॉलेज एजुकेशन तक आप हर किसी को गाइड करना चाहती है. तो आज ये मौका, आज भारत गुरु चैनल पर, तो आज सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमने दर्शकों को बता दिया है कि क्लासरूम टू बोर्ड रूम विथ हायर एजुकेशन, तो फिर जो क्लासरूम की बात आती है, तो जब स्टूडेंट्स की बात आती है, तो स्टूडेंट्स का कैसा अप्रोच एजुकेशनल सिस्टम में आपको देखने को मिलता है? शुरुआत मैं स्कूल से करूँगी, सिंस आई एम इन्वॉल्व बोथ स्कूल लेवल एज वेल एज हायर एजुकेशन लेवल. स्कूल में बच्चे बहुत रॉ रहते हैं. वो आते हैं और व्हाट द रोल ऑफ द टीचर एंड द रोल ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट इज़ टू मोल्ड देम एंड शेप देम. व्हेन चिल्ड्रन मूव इनटू हायर एजुकेशन, जब वो ग्रेजुएशन तक पहुँचते हैं, बाय देन दे हैव एन आइडिया एज टू व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू, व्हाट career or what paths they want to pursue. There are different fields wherein we've got
fields like probably allied health sciences. We've also got fields like management, wherein in health sciences the students are pretty clear कि उनको क्या करना है आगे जाके. But in fields like management, आगे जाके they probably want to become a manager, they probably want to pursue higher studies, they probably want to get into their professional field directly, या तो PhD करनी रहती है. So it depends on how clear the child is about what he or she wants to do. It's an observation now, and because of the implementation of the national education policy, ऐसा हो रहा है that right from school बच्चों को एक orientation मिल रहा है. School level से ही when the child goes into 9th or 10th, they are asked to choose a group of subjects which they feel they will be able to pursue when into their higher education as well. So let's बहुत broadly अगर बात करें हम तो ऐसा रहता है कि commerce and science, these are the two groups that the child has to choose from. और उसमें फ़ायदा क्या रहता है that the children automatically get to focus on what they are good at, on what they like, on what they feel that they will be able to pursue going forward. And the system is being designed such now that by 9th and 10th the children will be very clear about what they want to do in life later on. Second advantage is that the children automatically eliminate what they don't like. तो वो पूरे with their whole energy, heart and soul वो focus कर सकते हैं on the subjects that they do like. So I would say when I was a student, which was, I won't say the number of years, you all can guess that, but before, like when I was in school and college, तब जो approach रहता था that it was primarily the parents who used to decide, especially for higher education. I think your inclination is this, I think you're good in maths, so go for engineering. I think you're very brilliant, you've got a good score, 10वीं में अच्छे मार्क मिले, 12वीं में अच्छे मार्क मिले, then you should आप engineering के लिए जाओ. So these were the two broad fields, but now since the avenues are opening up in a big way, इतना choice बच्चों को है, but अच्छा भी लगता है that there is a lot of choice, and at the same time बच्चे focused भी है about what they want to do. By the time they're 18, 19, they know what they want to pursue. तो आजकल उनका अप्रोच जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ एक गोल सेटिंग की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है? एब्सोल्युटली. जब वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आते हैं, दे आर परस्यूइंग अ BBA, तो कुछ बच्चों का ऐसे भी रहता है दैट दे हैव अ सेट बिजनेस, उनके फैमिली का बिजनेस रहता है विच दे इवेंचुअली वांट टू see, but you oversee rather, which they eventually want to oversee. पर अभी इतना रिस्ट्रिक्टेड स्कोप नहीं है उनके मन में. वो क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है बिजनेस तो चालू है, मैं क्या ऐड कर सकता हूँ या मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ इन दिस बिजनेस. आई वांट टू टेक इट ग्लोबल. ये जो फिनोमेना है दैट यू हैव द वर्ल्ड एट योर फिंगर टिप्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द फोन, इसका ट्रांसलेशन पॉजिटिवली भी होता है. वी जस्ट टॉक अबाउट स्टूडेंट्स गेटिंग एंगेज्ड इन सोशल मीडिया एंड हाउ इट इज डेट्रीमेंटल टू देम, बट बिकॉज दे हैव एक्सपोजर टू दिस, बिकॉज दे कैन एक्सप्लोर all these things at fingertips, उसकी वजह से उनका एक आउटलुक बहुत अलग होता है when they start off with their graduation. कि if I have a business, how do I take it to the next level? What can I do to make it more globalized, make it more relevant? कुछ बच्चे जो रहते हैं that उनको जॉब रहता है, they want to pursue a job, they want to get into the professional field, they are again very clear as to what pay scale I want as well. So at the beginning of the semester, whenever the first years आते हैं कॉलेज में, उनको एक एक्सरसाइज दिया जाता है गोल सेटिंग का. एक इंडक्शन प्रोग्राम रहता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम. व्हाई आर यू हियर? 3 साल के बाद आपको वेयर डू यू सी योरसेल्फ, आपको जर्नी जो है 3 साल की, इसमें क्या क्या सीखना है. सो देन द चिल्ड्रन आर वेरी रॉ, तो उनका इतना स्पेसिफिक नहीं रहता गोल सेटिंग, बट एटलीस्ट दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दे वांट टू गेट इनटू वंस दे लीव द कॉलेज, और कितना पे स्केल भी चाहिए ये भी बहुत क्लियर रहता है उनके दिमाग में. सो आई वुड से येस, दे हैव अ मच बेटर ओरिएंटेशन देन probably students who were 20-25 years
ago. तब से now it has become it is a great evolution as well. तो आपने क्या गैप फिर ऑब्जर्व किया है उनकी सोच में? अगर उनको इतना गोल सेटिंग के बारे में पता है या उनको पता है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपने क्या गैप आइडेंटिफाई किया है इन स्टूडेंट्स की जिसकी ज़रूरत है आज उन्हें? राइट जब मैंने कहा कि वो बहुत फोकस्ड रहते हैं, एट द सेम टाइम वहाँ कैसे पहुँचना है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन इन देयर माइंड. अच्छा मुझे जाना तो है, आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस कंपनी, आई वॉन्ट टू टेक माई बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, एंड बट how do I do it? That is when obviously the institution, the place of education, your teachers, your mentors, your the management, all of them come into the picture. National education policy, yes, uski wajah se there has been a big change in the approach towards education. Okay. So we are still learning the same content because some of the basic content for you to get a job वो तो same ही रहने वाला है. Some of your whatever you need to implement, whatever you need to know, how you're going to strategize, plan, all of these things are going to be the same, but at the same time how you approach it, that is something that is evolving all the time. So बच्चों को ये skills, बच्चों को ये approach कि industry में क्या, what is it that is needed, you give that kind of exposure. Like I said, the internet can be used in a very positive way. तो बच्चों को case studies or from across the globe, because nowadays children are lucky enough that probably when they graduate they get an opportunity to go abroad immediately, right, because the world is becoming seamless now. इतना compartmentalized नहीं है जितना पहले था. Right. So there are going to be businesses across the globe. Probably if a child is lucky he gets that opportunity immediately. तो it's always that gap as to मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, and that is when obviously like I said the institution comes into the picture. हाँ, तो उन्हें वो गाइडेंस, वो गाइडलाइन इंस्टीट्यूट में मिल सकता है. Yes. अभी जो आपने जिक्र किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, क्या ये पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी? Sure. In very simple terms, I'll try and make it as simple as possible because the term is being used so much nowadays, और उसका थोड़ा सा डर भी लगता है पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि ये क्या है अभी. But actually it is something which has simplified education in a big way. Okay. तो जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तब से the government has planned it in a way wherein right from schooling to the time they complete their post graduation, Okay. it will be something that is implemented at a standardized level. तो स्कूल में जब बच्चे रहते हैं, so right now they have defined two categories, skills and life skills. Yes. So skills are obviously what are required now, as you understand, as as we are evolving, naturally the requirements from the industry are evolving as well. Okay. So the basic skill set required from probably somebody who was going to be employed maybe 20 साल पहले और अभी, even 5 साल पहले और अभी, because COVID has played a big role in changing the expectations of the management and the skill set required as well. तो स्कूल में जो skills रहते हैं, so that is obviously they're equipping the children with knowledge about IT, knowledge about financial markets, knowledge about media, knowledge about basic management skills, knowledge about tourism industry. Okay. So there are about 12 to 15 categories wherein the child can choose. This is what I feel is important for me. और उसमें ना there is one very good thing that has happened कि ये सिर्फ theory तक restricted नहीं है. अच्छा. इसमें theory as well as the application of this theory in the real world, that is being focused on right now. तो वो बहुत I think that is an aspect जो बच्चों को बहुत useful रहेगा when going forward as well. And life skills are again something that you can start teaching your child right from the age of nursery, because those are age appropriate life skills. So it is as something as simple as अभी मैंने काम किया है, if we talk about preschool, मेरा अभी नोटबुक का काम हुआ है, मैंने कलरिंग किया है, मैं अपने खुद के कंपास बॉक्स में मेरे सब क्रेयॉन्स डाल देती हूँ या डाल देता हूँ, and then I pack it up and I
pack my bag neatly. That is a life skill as well for that particular age. Right. So introducing these kind of life skills at different stages, at different levels, age appropriate life skills. So as you progress, it could be something as simple as folding your own clothes. It could be something as simple as probably table manners and etiquettes, how you greet your teachers every day, then soft skills. Then as we move ahead, right up to, probably from the 6th standard, you start introducing why is saving important? Yeah. What does saving mean? How do you make yes, because normally स्कूल में कैसे रहते हैं बच्चे, ये पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब पढ़ते हैं, अरिथमेटिक पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है? That has to start from a very basic level now, from a very early age. And I'm glad that this is happening even in school age, because children who are in the 6th standard are exposed to this. Then in the 7th and 8th, 9th and 10th, they are taught how to make a budget. Then they are taught, they're introduced to share markets. They're introduced to, what are investments, how you can invest your money. So at the end of the 10th standard, they are able to, they're at least equipped. I won't say they're experts, but they're at least equipped कि खुद का saving एक manage कर सकते हैं, एक plan रहता है दिमाग में. So this is the kind of evolution that the education is seeing right now. So like I said, for the national education policy, even at higher education level, I can tell you things like they've added value added programs, value added courses, or they've added skill enhancement courses. They've also added ability enhancement courses. Basically what it means is that along with your core subjects, so anybody who's studying management studies, उनके core subjects रहते हैं marketing का knowledge, finance का knowledge, HR का knowledge, functioning का knowledge, basic जो management processes रहते हैं उनका knowledge. उसके बजाय if the child feels I have an interest in psychology, right, or that course is being offered probably somewhere in the university, that child can take that course as an additional module, and he will be marked for it, and it will be recorded in on his mark sheet, saying that he has done this extra credit. He has got this psychology certificate as well. In what way does it help the child? Probably if later on when he moves on to the management field, जब वो job के लिए apply करता है, तब जब रिक्रूटमेंट के लिए उसका रेज्यूमे आता है सामने, तो वो जो मैनेजमेंट के लिए दिखता है that child has done management, that child has learned HR, in addition to that child has learned psychology as well. So that is obviously going to help the child in his or her when they start working. So day to day life में अगर वो HR की साइड में जाता है, तो obviously psychology plays a big part, not just during recruitment, but in handling day to day issues as well. तो ये सब चीज़ें जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है along with national education policy, it is moving more towards a wholesome development of a wholesome personality. Another thing is that एक academic bank of credits ऐसे कॉन्सेप्ट है. तो बच्चा अगर स्कूल में भी कोई अलग कोर्स लेता है, it could be something as simple as photography. Basic photography स्कूल में पढ़ी है. From the school itself, the child will be given an opportunity, उनके skills पे focus रहेगा, and there is a concept which is called as academic bank of credits. So that is basically a digital bank wherein बच्चों ने जो भी पढ़ा है, जो भी modules उन्होंने पढ़े हैं, वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे इस academic bank of credits में. For example, स्कूल में अगर बच्चे ने basic level photography का कोर्स किया है, the school has introduced different courses probably, so photography is one of them. वो जो पढ़ा है उसका भी क्रेडिट बच्चे को मिलेगा, and that will be recorded in the academic bank of credits. So that at a later stage, अगर उसको advanced photography pursue करना है, तो ये जो basic पढ़ा है, that is going to help him in building up from this particular level. So this is the way अभी functioning शुरू है, and skills के तरफ तो बहुत ध्यान अभी दे रहे हैं in the national education policy. पर अब जब हम NEP बोलते हैं स्कूल में, टीचर्स भी बताते हैं NEP हो रहा है, बट क्या ये ओवरनाइट चेंज होगा, अडॉप्ट करना टीचर्स को, बच्चों को? How it will implement like?
सी इट इज़ अ प्रोसेस, और किसी भी प्रोसेस को काम करने में एक पूरा साइकिल जाता है। अभी शुरुआत की है इम्प्लीमेंटिंग इट फ्रॉम स्कूल लेवल एंड टेकिंग इट टू द हायर एजुकेशन लेवल। वी द बिगेस्ट चेंज दैट वी सीन इज दैट जो ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम 3 साल का था, अभी वो 4 साल का भी हो सकता है। सो देर आर डिफरेंट एग्जिट पॉइंट्स विच द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। There is the first year at which you can exit when you get a certificate diploma. At the second year you get an advanced diploma. At the third year you get a degree, and at the fourth year you get an honors degree. So the biggest change that we have seen abhi in the undergraduate degree program is that the government has changed from the 3-year program to a 4-year program. So, and what is good about this is that there are multiple exit points when a student is studying. तो पहले साल में बच्चों को basic knowledge दिया जाएगा, and if the child wishes to exit from that particular point, एक साल complete हो गया है, तो that child can take a certificate and leave. So that's a certificate level उनको qualification मिलता है. Second is if he completes the second year, then it's a diploma level qualification that they get. Third is again you get the entire degree, and fourth is you get a degree with honors. So ये जो structure किया है, that helps in a lot of postgraduate programs as well, because काफ़ी बच्चे बाहर जाते हैं सीखने के लिए. After their basic degree they move out of India. तो especially US में पहले बच्चों को ये दिक्कत आती थी कि दे हैव अ 4-year डिग्री प्रोग्राम देयर, और यहाँ से वो डिग्री करके जाते थे, दे हैड टू डू समथिंग इन बिटवीन फॉर अ ईयर. सो फिर वो क्वालिफाई हो जाते थे उनके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए. सो द गवर्नमेंट और दिस पॉलिसी इज लुकिंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, टुवर्ड्स सीमलेस मूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड ये अच्छी चीज़ है दैट दे हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम द स्कूल. एंड स्कूल में भी द कंटेंट हैज़ नॉट चेंज्ड मच, बिकॉज लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, जो चीज़ें सीखनी है वो तो सीखनी है, बेसिक नॉलेज जो मिलना चाहिए वो तो मिलना चाहिए, बट द अप्रोच टुवर्ड्स इट is changing, and it will not happen overnight, because it's a learning process for the teachers as well as for the students, and for the parents as well as for the industry as well. तो जो सारे stakeholders रहते हैं in the education field, उन सब के लिए it's a big learning process, and it started on the right note, and there is a lot of extensive training involved in this for all the teachers, faculty members as well, for all the facilitators as well, and everybody is going through that stage right now. So they are getting trained for this. They are getting trained extensively for this, because ये जो है अभी methodology, ये application oriented है. So application of the knowledge that you're getting, how are you going to utilize it? So at school level it is preparing them for higher education. At higher education level they are preparing them for the industry. So it was not before. You are saying due to national educational policy it is going to increase. The approach has definitely changed, and the focus, even at school level. I'll just tell you a small example, because I work very closely with the school as well. All the lessons earlier we would learn, the teachers would teach us any chapter or lesson from the textbook. It was more of okay, ये हो गया है, अभी पीछे के जो questions रहते वो solve करो, हो गया काम आपका. आप exams में ये लिख you have to write all these things in the exam. Now the teacher has to set an outcome. So everything that you teach is outcome oriented. Why are you teaching this? What is expected from this? For example, if a teacher is teaching English, even if it is a literature lesson, so of course you want to teach the child basics about from the lesson, whatever he is, the kind of content that he gets, he's going to learn more of the language. But again the teacher has to write about the outcome, think about the outcome, whether I want the child to learn adjectives from this, whether I want the child to learn idioms from this. So what is the outcome? So this has to be defined for every chapter, for every lesson across all subjects. तो ये approach जो है, that is again like I said, the application of knowledge. Why am I learning this? When we were studying, probably at that point, yes, probably at higher education level we knew this is my liking and this is what I'm learning and this is where I want to reach. So but at school level, if you start thinking about why am I learning this, how is this knowledge going to help me, and no knowledge is useless, no knowledge goes to waste. So as long as you're clear as to why I'm learning this, I think you start off with a much more focused approach.
इन द स्कूल, एट द स्कूल लेवल itself. क्लासरूम Yes, पहले yes. तो मैम जब क्लासरूम में बच्चे होते हैं तो उनका एज होता है 8, 9, 10, तो टीनेज का वो एक एज होता है. सो उन्हें बहुत कुछ करने की चाह होती है. तो फिर इसमें उनका कैसे अप्रोच रहना चाहिए, उन्होंने कौन से स्किल्स एक्वायर करने चाहिए एट दैट एज? राइट. तो जैसे पहले मैंने कहा दैट इन द करिकुलम इटसेल्फ अभी स्किल्स और लाइफ स्किल्स ये दो एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं. इट्स अक्रॉस द CBSE curriculum, even the ICSE. Eventually it will be implemented across all the curriculums. More than that, like I said, अभी बच्चों को they are very aware that this is what I like, and slowly, like I said, the approach is changing amongst the teachers as well. The teachers also mark these abilities कि अरे इस बच्चे में ये स्पार्क है, इस बच्चे में ये चीज़ अगर वो फोकस करे, this is where it's going, he has potential in this. Not in a way wherein you can't pursue anything else, this is what you have to do. It's not in that way. But if you focus on this, आपकी बेहतर प्रगति होगी. Okay. That is something that you will enjoy because at that age, whatever you're good at, if you focus on that, that is when you start feeling good about it. So वो confidence level तब बढ़ जाता है कि if I'm good at drawing and I pursue that, then I'm starting to get better in that, my confidence level increases. तो it's not just the way of looking at studies, उसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एस्पेक्ट रहता है, उसमें ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एस्पेक्ट रहता है. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी व्हेन इट कम्स टू प्रोबेबली बीइंग एम्प्लॉयमेंट रेडी, और इवन इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, दिस एंसिलरी स्किल सेट जो है पूरा ये you have to have confidence, you have to have the ability to communicate, you have to have the ability to think on your feet. All of these aspects are considered as important even when you're going to join a corporate firm, or you're going to start off something on your own, or even if you're going to pursue higher studies, at PhD level or something, even probably later. तो ये सब जो skill set है वो बच्चों में they have a basic understanding, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है अभी. And right from the age, like I said, 9th और 10th में बच्चों को choice दिया जाता है. These are the groups that you can choose from. So something as basic as, let's put it in a very broad term, commerce, or probably you want to choose science. तभी से choice रहता है कि अगर I am good at commerce, I want to pursue something related to commerce. I'll just tell you an example. My son जब वो 10वीं में था, तो वो he was pretty sure कि उसको commerce करना है. But एक बार after he gave his 10th standard exams, उसने मेरे साथ बात की कि can I think I should give science a try as well. Okay. तो हमने बैठ के वो पूरा एक एक्सरसाइज किया कि अगर उसने साइंस लिया 11th 12th में, तो बाद में उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. सो डज ही वांट टू डू दैट, डज ही वांट टू डू दिस, ये सब करके वी एलिमिनेटेड वन बाय वन कि ओके ये नहीं करना है मुझे, ये नहीं करना है. देन सिमिलरली कॉमर्स के बाद अगर उसको व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट ही विल गेट. सो कॉमर्स के बाद भी ये हमने किया कि ओके ये परस्यू करना है, ये परस्यू करना है, ये परस्यू करना है. सो दैट इज व्हेन इवेंचुअली वी केम टू अ पॉइंट वेयर ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड दैट इज व्हेन ही सेड कि ओके आई थिंक आई विल स्टिक टू माय चॉइस, आई विल कंटिन्यू विद कॉमर्स. सो नॉर्मली पेरेंट्स का अप्रोच ऐसे रहता है दैट take science, keep your options open. Later on you can always shift from science to commerce if you want. Later. But nowadays children are very focused and they're very aware. तो उसने ये भी कहा कि मुझे finance में करना है, मुझे entrepreneurship studies करने हैं. So they are very aware about and they discuss these amongst their friends. हमको लगता है कि बच्चे सिर्फ रील देखते हैं, but at times I wouldn't say all the time, but yes, they do discuss this amongst their friends कि अरे ये भी एक avenue है जो हम explore कर सकते हैं. तो उन्हें उसमें से क्या लेना है वो मैटर करता है. जस्ट वो मोबाइल देख रहा है या रील्स देख रहा है, ये मैटर नहीं करता है, वो उसमें से क्या ले रहा है. That is very important. And it can be a big tool, it can be a tool which helps them in trying to get to know how they can shape their career as well, provided they utilize it in the right way. अभी जैसे आपके बातों से मुझे पता चला कि एक पेरेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के इसमें. तो हम बोलते हैं नहीं, टीचर्स ने NEP फॉलो कर रहे हैं अभी टीचर्स, और अभी स्टूडेंट्स में भी ये स्किल्स की बात हो रही है. तो फिर जब घर की बात आती है तो कितना घर का एनवायरनमेंट, कितना पेरेंट का ड्यूटी मैटर करता है टू शेप देयर करियर.
I would say in the schooling years, yes, school is the most important aspect. The child spends सबसे ज़्यादा वक्त तो स्कूल में ही बिताता है. Child बहुत सारी चीज़ें सीखता है. I would say basic survival skills, basic life skills सब स्कूल में सीखता है. But parents are the most important factor in their life, because that is something that is going to help him throughout his life. Parents का role change होते रहता है. So I am the parent of a teenager now. तो मुझे I've gone through that entire process. So just एक 2 दिन पहले की बात है. My son was unhappy with us, so with my husband and me, and he was back answering us and talking to us, and as parents we felt very bad, how is my child behaving like that. But then हमने बैठ के सोचा, और हमने सोचा कि अरे जब हम 18 साल के थे या 17 साल के थे तब हमने ऐसे ही बिहेव किया. So parents so there is nothing wrong with my child. This is how normal teenagers behave. So parents का role जो है, it's more of a hand holding role now. Okay. Be it during school years, communication is very important. I find it extremely important. Every day, whatever it is, you decide your space, you decide your time. कुछ parents को breakfast के time it's possible for them to talk to their child, because if the child goes to school late, तब they can have a discussion over breakfast. Then probably कुछ parents को dinner का time रहता है, because that is when everybody has come back from their workplace, and the child is also back from whatever activities, evening activities he pursues or she pursues. तो communication, छोटी सी चीज जो बच्चा बोल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट दैट मच इम्पॉर्टेंस, बिकॉज वो सिग्निफिकेंट है उनके लाइफ में. हमारे लिए छोटी सी चीज़ है. मतलब एक 3 साल somebody studying in the 3rd standard, वो घर पे आके बोलती है कि आज ना मेरी डेस्क पार्टनर ने मेरी पेंसिल ले ली, वो नहीं है मेरे पास. सो देन एज पेरेंट्स ऐसे लगता है हाँ ठीक है ना, इतनी छोटी सी चीज़ है. बट फॉर दैट चाइल्ड दैट इज़ अ वेरी बिग इंसिडेंट during the day. Right. So it is very important to communicate during school years. It is very important to at times move out of the role of somebody who is a disciplinarian. Somebody, yes, we all want our child to be on the right track. We all want our children to be good citizens. But at the same time, we have to understand that we were children as well, right? Yeah. And that is the kind of how our parents with us, or what we expected from our parents, is what our child is expecting from us right now. So later on, I would say when it moves on to higher education, that is when you have to move to the role of hand holding with your child as well. Yeah. So even if you don't understand everything, the child is also not understanding everything. What is this national education policy? What is honors? What does it mean when I have to take honors as a 4th year? How is it going to affect my career? So there is, there are newer fields emerging every day. Yeah. Even in management studies, there are avenues opening up every single day. So the child is also keeping up with these things. As parents, you just have to, like I said, play the role of a hand holder, wherein you say, okay, we'll look it up together. I don't know either. Let's explore it together. So I think the children of today, the students of today, उनको बहुत ज़्यादा pressure है as compared to us. Exactly. That is because yes, because there are so many more avenues, and the more choice, the more pressure at times as well. Plus, they are exposed to so much more on social media. We didn't even know half of the things that were going on when we were growing up, but they know everything, and they feel that this is some place where they see probably videos from other children, they've put it up, they see what other people are achieving, and they are in a rush, over expectations in very little time. So they're in a rush to achieve all these things, wherein that is when the parent comes in and tells them, okay, this is what you're seeing. Probably after that person has given 10 years of their life to this, so you will get there. So let's sit together and make a plan for this. So it is more of being with them, probably being their partner at times, holding hands, and at the same time telling them that yes, we've got your back. हमको पता है यहाँ कैसे जाना है, तो I will be able to help you in this. हाँ, तो अब जैसे इसमें एक वुमन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक फैमिली में, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है फादर की भी और मदर की भी. बट मदर हैज सो मेनी थिंग्स टू डू विथ हर करियर. इफ शी इज करियर ओरिएंटेड, then what you will say about it, how mothers should tackle this?
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगी, इफ यू डोंट माइंड. माय मदर वाज अ हाउसवाइफ. शी हैज बीन अ हाउसवाइफ थ्रू आउट हर लाइफ. और मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ करियर फॉर माई सेल्फ. ऑटोमेटिकली कैसे रहता है ना, बच्चे जो पहले से देखते हैं. सो मुझे आदत थी, माई मदर बीइंग एट होम व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, उसके साथ बात करना. मेरी स्कूल जल्दी खत्म हो जाती बाय 2:30, so I would come back home or lunch I would have with her. So then when I would talk to her about it, how my day was. So when I started with my career, obviously I couldn't be, yes, there were times wherein I did take out time for my son when he would come back from school. जब तक वो adjust नहीं हो जाता था in the new environment, मैं उसको pick up करने के लिए जाती थी. And I would come back with him. He would have lunch and I would go back to office then. But obviously that was not something that I could do throughout. That was something, probably it's just the initial adjustment phase. तब बट नाउ आई सी वो इतना easily adjust और adapt हो जाता है. He is like, so अभी वो 12th में है. And even today when I was coming for this podcast, he called me saying कि मेरा I have just come back from tuition, I'm going to solve a paper now. So I said, okay, do you want me to come early? No, you please finish your work. When you come back, then we can discuss a few MCQs that we have. So it is what the child sees. Why I'm telling you from my life is because these are two different things that I have experienced. When I was a child, I expected my mother to be there for me every time. And probably my problem solving ability, मेरी decision making ability was a lot dependent on her. But the way I see my child progressing is very different because he has always seen his mother working. तो उसमें वो distinction नहीं है that मेरी माँ घर पे रहनी. Of course हर बच्चे को लगता है कि जब they're ill, they probably they want their mother. So that is when obviously all mothers make an effort to be there for their child whenever they fall sick. But उसके उसकी वजह से आई फील माई चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड हिज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. वो जो पोटेंशियल है और उसका जो आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ही इज़ एबल टू थिंक मच मोर फॉर हिमसेल्फ. ही बिकेम इंडिपेंडेंट एट अ वेरी अर्ली एज. एंड आई सी दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड मेच्योरिटी इन हिम एट 17, विच आई सी इन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स. कि उनको ना वो डिपेंडेंट नहीं रहते किसी पे. दे जस्ट स्टार्ट टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, दे कंसल्ट देयर पेरेंट्स एंड दे आर ऑन देयर ओन ट्रैक. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आई थिंक फॉर दीज चिल्ड्रन एज वेल. या सो द कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट वेर एवर you work or wherever you take the decisions, but communication ये बहुत ज़रूरी है. It's always important because बच्चे बहुत adaptable रहते हैं. हम जैसे सिखाएंगे उनको वैसे वो सीख जाते हैं. So if they're exposed to this kind of environment wherein they know that yes, my father is working but my mother is working as well, and they adapt to it so beautifully. वो expect भी नहीं करते कि my if somebody else's mother is at she's a housewife, which is an equally important, I would say it's an equally important task. But वो compare नहीं करते कि ये तो रहती है घर पे, you are not here all the time. They just learn to go with the flow. And that is when we make our own space. Like I said, for working parents, I think dinner time is the best time to have a conversation with your children, and that becomes much more productive also. Because in that limited time, you have a lot to discuss, you have a lot to share. So वो बहुत important रहता है. But yes, like I can't say enough, but communication is definitely the key at all times. तो जैसे आपने बोला कि बच्चों को एक करियर गाइडेंस या उनको एक हायर एजुकेशन में शेप करने के लिए घर भी मैटर करता है, स्कूल भी मैटर करता है. बट व्हेन दे चूज देयर करियर, हाउ दे शुड चूज देयर करियर एज एन एजुकेटर, व्हाट डू यू फील? Yes, now we have tools. ये सारे there are tests as well, career guidance tests रहते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट रहते हैं जो बच्चों के the aptitude test रहते हैं जो बताते हैं कि बच्चों का inclination कहाँ है. Right. That is the basic level test that you can have.